मतलब खरीदने के बाद ही 1 महीने बाद ही मैंने इस पे स्क्रैच लगवा दिया था। मुझे डर लगता रहता था कि कोई मेरा डायरी पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल, तो उस सबको मुझे छुपाना था, तो मैंने वो सारे डायरीज अपने जला दिए। इट स्मेल्स लाइक मेडिसिन फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। आई थिंक मैंने पैकेजिंग तोड़ ही दिया। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, दीज वर ऑल ग्रेट। Sahnaz and welcome back to my channel and welcome to today's video. So today's video I am going to do another haul, but आज का haul थोड़ा different होने वाला है because usually when I do haul videos I do dedicated haul videos like Meesho का haul, Nykaa का haul, Amazon का haul. So आज के वीडियो में सब कुछ होने वाला है except clothing. कपड़े में नहीं दिखाने वाली हूँ, but I do have a lot of makeup, also some stationery products and also I recently got a new phone, तो वो भी मैं दिखाने वाली हूँ. So आज का वीडियो एक random सा haul है and I also have some PR from Sugar and my glad to share with you guys. So yeah, if you guys are interested to watch a haul video, then without much blabbering, let's get started. Okay, so first I'll start with Sugar. और Sugar का जो पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली PR में आया है, मैंने उनके साथ कोलैब किया है, तो वैसे मुझे मिला है Sugar के सारे प्रोडक्ट्स. So the first product here is this Sugar Set the Tone Tinted Powder. So this is a loose powder और ये इस पैकेजिंग में आया है. As you can see, I kept the packaging because ये बहुत ही अच्छा सा बैग है. इसके अंदर बबल रैप्स भी दिया हुआ है, as you can see. So coming to the powder, I have not used the powder yet. मैंने शायद इसका पैकेजिंग like जो सील व्हील होता है ना, वो भी नहीं खोला होगा शायद. This is how the powder looks. It looks super classy and super luxurious. I really like the packaging of Sugar. और ये एक स्पंज के साथ आता है to apply. आप देख सकते हो मैंने इसका सील भी नहीं खोला है अब तक. So yeah, obviously I have not used this product at all. It's been a while this product has been sitting there on my bag. Now coming to the next product, I have a bunch of Sugar products here, as you can see. तो जल्दी करके दिखा देती हूँ. So the first one is this Sugar Grand Finale Dewy Setting Mist. So this is how the setting mist looks like. इसको भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है because I already have a elf का setting mist. And to be very honest, मैं सिर्फ घर पे बैठ के ही मेकअप करती हूँ कैमरे के सामने, तो मैं setting mist इतना नहीं लगाती हूँ. एंड बाहर जाना तो इतना होता नहीं है, जाती भी हूँ तो I always forget to use a setting mist. So इतना यूज़ नहीं होता है मेरे मेकअप में सेटिंग मिस्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ मस्कारा. दिस इज द Sugar अपटाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा इन द शेड ब्लैक ब्यूटी. नाउ Sugar के जो मस्कारा होते हैं ना, आई रियली डोंट लाइक इट बिकॉज दे आर नॉट वाटर प्रूफ. I mean I don't like waterproof mascaras that are too hard to remove, but this one आप अगर थोड़ा सा मतलब आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, just little watery eyes also अगर आपका होगा, then the mascara will come off. So it is like very non waterproof, which is why I don't like it so much और मैं इसको इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ. Now coming to the next one, we have two eyeliners here from Sugar. One is the Gloss Boss 24-hour eyeliner, back in black. Again, this is also not a waterproof eyeliner. पानी के साथ मतलब पानी में अगर इसको आप लगा के मतलब इसमें अगर आप पानी लगा के ऐसे रब कर दोगे तो ये निकल के आ जाता है. सो दिस इज़ नॉट वाटरप्रूफ. आई लाइक टू हैव आईलाइनर्स विच आर micellar, which can be removed easily by micellar water or cleansing balm, but not with water. Again, the next eyeliner that I have from Sugar is the Sugar I Told You So Smudge Proof eyeliner. This is in the shade Black Swan. Now this is a waterproof eyeliner, but the formula of this eyeliner is very dry. मतलब ये आप मतलब ये प्रोडक्ट निकाल के आप अपने आँख तक पहुँच ही नहीं पाओगे. ये प्रोडक्ट सूख जाता है मतलब ब्रश में. So it's so dry and it dries really very quickly. So again, not a very big fan of Sugar ka eyeliners and mascara. Now the next product and the second last product from Sugar is the lipstick. So this is the Sugar Smudge Me Not liquid lipstick in the shade Dose of Rose. It is a very nice pink shade and this is the packaging. Again मैंने इसको यूज़ किया ही नहीं है, एकदम नया पड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट्स. एंड दिस इज़ द बिग साइज, नॉट द मिनी वर्जन. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसका शेड मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ. इट्स अ नाइस पिंक शेड. या एज यू कैन सी द शेड इज़ रियली गुड. इट इज़ नॉट लाइक अ छटाक सा मतलब हॉट पिंक शेड, बट इट इज़ a pink shade with some nude and dark tone to it. So I really like that.
एंड शुगर के स्मज मी नॉट रेंज का जो लिपस्टिक्स है, आई रियली लाइक दीज लिपस्टिक्स. दे आर रियली वेरी वाटर प्रूफ. दे स्टे ऑन योर लिप्स फॉर अ really long time, so I would definitely recommend the sugar lipstick. Now the last product from Sugar is an eyeshadow palette, and I was really very excited for this palette because I really love eyeshadow palettes. Rather than using them, I like to collect eyeshadow palettes. I have just this thing where I go crazy over eyeshadow palettes. But anyways, today we have this Sugar Blend the Rules eyeshadow palette, and I got it in the shade 04 Fetish. एंड इट हैज़ गॉट सम प्रीटी नाइस न्यूट्रल शेड. और इसके साथ ये ब्रश भी आया है छोटा सा, जो कि मतलब बेकार सा नहीं है, अच्छा ब्रश है. तो या काफ़ी अच्छा पैलेट है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस न्यूट्रल पैलेट विद शिमर्स एंड मैट शेड्स इन इट, यू कैन गो फॉर दिस वन. ओके, पीआर के बारे में हमने बात कर लिया है. नेक्स्ट आई अगेन हैव सम पीआर फ्रॉम माई ग्लैम, बट उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं, तो जल्दी दिखा देती हूँ. आई गॉट दिस लाइक पैलेट. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई शेडो पैलेट, जो मैंने मतलब जिस पे मैंने अपना आँख जमा के रखा हुआ था कि मुझे ये लेना है किसी दिन. And I'm so glad that I got this chance to collaborate with MyGlam and get this one for free because it's really costly. So I'm talking about this eyeshadow palette by Manish Malhotra. I can't wait to review this on my YouTube channel, but this is how the eyeshadow looks like. ये इस packaging में आया है. Again, the packaging looks top notch, very classy and luxurious, and this is the palette. So yeah, आप देख सकते हो पैलेट का आउटर पैकेजिंग भी काफ़ी क्लासी और लग्जूरियस है. इट हैज़ गॉट दीज गोल्ड लाइनिंग ऑल ओवर. बट एनीवेज, दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स. और इसके जो शेड्स है काफ़ी अच्छे हैं. लेट मी शो इट यू गाइस. इट ऑल्सो कम्स विद दिस बिग मिरर जो कि काफ़ी बड़ा है. एंड दीज आर द शेड्स एज यू कैन सी. इट हैज़ ब्लू, green, maroon, white and some shimmer shades. I also love how cute and small this, like travel friendly this palette is. You can see it's very chotu, so it's really cute, classy, bougie, so I like it. Okay, the next product from MyGlam is something I got from their Pop Exo collection. So this is the MyGlam Pop Exo Insta Glam Face Kit. तो इसका पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट्स क्लासी एंड लग्जूरियस. इट इज़ जस्ट अ वेरी क्यूट पैकेजिंग, obviously because it's in the color pink. So it's basically a face palette जहाँ पे white shade है जो आप as a compact use कर सकते हो, like a clear loose white loose powder. And these two are the blush shade and this is a highlighter shade. So if you're looking for this kind of an all-in-all palette, you can definitely go for this one. Now coming to the last product that we have here from MyGlam. उसके बाद हम मेकअप को साइड में रख के कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है. So the next one is this MyGlam K-Play flavored lip gloss. Now this is how the packaging looks like. Outer packaging काफ़ी cute है as you can see. I don't know what flavor or what shade I got this in, but ये एक बहुत ही bright red shade है and I thought it would look good on me. And इसका जो smell है ना, it smells like medicine for some reason. I don't know. I don't like this smell. It smells like medicine, but let me show you guys the swatch. Look at that. It's a very bright red color, and because this is a gloss, so it doesn't mattify. अगर ये matte होता ना, then it would have been my favorite red lipstick. So guys, these are all the PR products that I recently got in my PR. But yeah, now let's move on to some products that I got with my own money. So yeah. So first I will talk about the big investment that I made this year. जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. जो मेरा फ़ोन है, मतलब मेरा पुराना फ़ोन, लेट मी गेट इट. सो या दिस इज़ माई पुराना फ़ोन, माई ओल्ड फ़ोन, जो कि अभी मैं अपने ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ. सो ये दिस इज़ द Redmi Note 7 Pro. तो इसको मैंने आई थिंक इन द ईयर 2018 में ही लिया था. अब तक ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है. इसका फ्रंट कैमरा भी, बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा है. बैक कैमरे में थोड़ा सा स्क्रैच है, जो कि मतलब ख़रीदने के बाद ही 1 महीने बाद ही मैंने इस पर स्क्रैच लगवा दिया था. बट इसको मैंने कभी रिपेयर किया ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा था इतने सालों से. बट एनीवेज, दिस वाज माय ओल्ड फ़ोन. तो मतलब रिसेंटली क्या हुआ, ये मतलब अचानक से इट स्टॉप्ड वर्किंग वन डे. तो मुझे इंस्टेंटली एक फ़ोन लेना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली यार फ़ोन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. एंड आई ऑल्सो हैड सम ऑफिस वर्क टू डू, तो इसलिए मुझे फ़ोन इंस्टेंटली लेना पड़ा. तो मैंने बहुत सर्च किया एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग एंड थिंकिंग, पहले तो मैंने सोचा गो फॉर एन आईफोन. आई रियली वांटेड टू गेट द iPhone 13 Pro Max, बट ये कुछ ज़्यादा ही था, मतलब बजट से डबल हो गया था.
माई बजट वॉज अराउंड 40 to 50,000। तो आईफोन उसमें मिल जाता मुझे, बट अगेन मुझे मेमोरी स्पेस का प्रॉब्लम है। लाइक आईफोन 11 या 12 एंड आई थिंक 13 भी अमेजोन पे मिल रहा था। इफ़ आई गेट द 64 GB वाला वर्जन इज लाइक नॉट अंडर माई बजट, बट माई ब्रदर वॉज स्टिल इंसिस्टिंग मी टू टेक एन आईफोन, यू नो, लोन वगैरह लेके। बट आई वाज लाइक नहीं यार, मैं अभी मैं नहीं ले सकती, लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर इट। So after a lot of thinking and overthinking and discussion with myself, I decided to get the OnePlus 10R। तो ये जो फ़ोन है ना, ये मेरे सपने में आया था। आई एम नॉट इवन किडिंग यू गाइस। मैंने सपने में ये देखा कि एक्सीडेंटली मैंने ब्लैक कलर ले लिया, एंड उसके बाद हम क्राइंग कि मुझे ग्रीन कलर लेना चाहिए, तो मुझे ग्रीन कलर लेना है। एंड देन आई जस्ट वोक अप एंड आई वाज लाइक ओके, अब तक तुमने ख़रीदा नहीं है शहनाज, सो यू कैन स्टिल मेक अ डिसीजन। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। बट एनीवेज, ये जब पहले लॉन्च भी नहीं हुआ था, इट वॉज अबाउट टू लॉन्च, इसके एडवर्टाइजमेंट्स मेरे फ़ोन पे बहुत आते थे। मतलब इस वाले फ़ोन में जब भी मैं कुछ भी हॉटस्टार पे देख रही हूँ तो इस फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता था, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये कितना प्यारा है, आई होप कि मैं ये कभी ले पाती। एंड इसका प्राइस अराउंड 43,000 कुछ था, 40,000 43,000 का है। तो आई वॉज लाइक यार 40,000 का फ़ोन मैं लूँगी तो मम्मी मार डालेगी। बट आई नेवर थॉट कि इसी साल आई वुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन दिस फ़ोन। बट या आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड ये बिना कवर का नहीं है, इसके साथ मतलब मैचिंग मैंने ये कवर भी ले लिया है। सो मुझे ना पर्पल कलर या फिर ग्रीन कलर का आईफोन लेने का बहुत शौक है, एंड मैं लूँगी एक दिन फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने उसके साथ मैचिंग अभी के लिए इस एंड्रॉयड को ही थोड़ा आईफोन वाइब देने के लिए ये मैचिंग फ़ोन कवर लिया है, विच अगेन लुक्स रियली क्यूट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट हैप्पी विथ माई फ़ोन जस्ट बिकॉज इट्स नॉट एन आईफोन। आई एम रियली हैप्पी, दिस इज़ लाइक माई न्यू बेबी, आई रियली लव दिस फ़ोन। एंड या इसका कैमरा क्वालिटी एंड ऑल भी काफ़ी अच्छा टॉप नॉच है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द फ़ोन, एंड आईफोन लेंगे किसी दिन फॉर श्योर। Okay, so that was all about the big investment, my new phone that I got recently. इसके बाद में मैंने Instagram पे वैसे भी एक स्टोरी डाला था, but anyways, now let's move on to some new products, new stationery products that I recently got from Amazon. ना मुझे stationery का शौक ना बचपन से ही है, मुझे डायरीज वगैरह जर्नल्स ये सब कलेक्ट करना बहुत पसंद है, एंड मैं बचपन में डायरी लिखती भी थी। आई यूज्ड टू जर्नल अ लॉट। लेकिन फिर मोस्ट ऑफ माई जर्नलिंग वॉज अबाउट माई रिलेशनशिप्स व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। तो उस सबको मुझे छुपाना था, तो मैंने वो सारे डायरीज अपने जला दिए, लाइक लिटरली, आई एम नॉट इवन किडिंग। मुझे डर लगता रहता था कि कोई मेरा डायरी पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल। आई जस्ट यू नो जलाउइंग ऑल ऑफ माई डायरीज, बट आई रियली रिग्रेटेड। आई विश वो डायरी अभी मेरे पास होता। ऑलमोस्ट 3 या 4 डायरीज मैंने जला दिए हैं, तो 3 to 4 years ऑफ माई लाइफ जो मैंने जर्नल किया है बचपन में, मैंने वो जला दिया है, लाइक उफ्फी। बट एनीवेज, recently I got 2 journals again from Amazon, and I'm not planning to journal, but I am planning to journal. I don't know, मैंने अब तक इसको यूज़ नहीं किया है। So these are the 2 journals that I got. First one is this black color journal. इसका ये front print मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है trust the process. This is the journal. इसके अंदर ये मतलब ruled pages है, मुझे बिना रूल वाले pages पसंद नहीं है, so ruled pages है। And this is from the brand Factor Notes. So yeah, these are the first journal looks like, and the next one is this lavender color journal, जो कि almost white लगता है, but it's lavender in color, बहुत light lavender है। And यहाँ पे एक फूल दिया हुआ है क्यूट सा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है Little Things in Life. Little Things is a series on Netflix. It's my favorite series. तो यहाँ पे जब Little Things लिखा हुआ मैंने देखा, मैंने सोचा let me just get this one. I mean this diary is not inspired by that series. I'm just saying कि yeah, little things in life do matter, and we should know how to be happy for the little things in life. तो उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डायरी खरीदी है। And the next and the last stationery product that I got from Amazon is a planner. Now this is not a yearly planner. This is not a yearly planner. I am planning to get myself an yearly planner for the year 2023. तो इसके लिए मैंने सोचा अभी से थोड़ा बहुत प्लानिंग करने का मतलब हैबिट कर लेते हैं। तो आई गॉट दिस वीकली प्लानर फ्रॉम अमेजॉन। कौन से ब्रांड से है ये, ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई विल लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट दिस इज हाउ द प्लानर लुक्स लाइक। यहाँ पे मंडे टू सैटरडे संडे तक का सब कुछ है, और एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर भी दिया हुआ है। दिस इज लाइक द बेसिक मिनिमम प्लानर। तो बिकॉज ऑफ द हैबिट
habit tracker thing I got it because I really want to track down few habits, and यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं that will overwhelm you guys. So it's a very basic मतलब minimal planner. तो इसलिए I got this one. I have still not used it. I am planning to use it from the upcoming week. So yeah. So yeah guys, that was it for today's video. This was a long ass haul video I must say, और बकबक भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने इस haul video में, but I really wanted this video to be a chill haul, random haul, showing you guys all the random things that I got recently, and सारे products के links मैं description में डाल दूँगी. You guys can go and check it out and do let me know what do you guys think about this haul video, और अगर आपको ऐसे haul videos पसंद है do let me know in the comment section below. And yeah, if you guys are seeing this face for the very first time, then go and check out my other videos. If you guys like the content and vibe of this channel, then do not forget to hit that subscribe button and the bell button right next to it. I am coming up with more videos these days. I am trying to be more consistent, and I have a Diwalog series coming in the month of October. So if you guys want to watch more of my content, then subscribe, hit the bell button, stay tuned, and you guys can also follow me on my Instagram, Facebook and Twitter. And that's it for today's video. I'll see you guys next time with a new video and a new content. Bye bye.